वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों मैं आज दोबारा उस वीडियो से ही कंटिन्यू कर रहा हूं जो मैं ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व कर रहा था आपके लिए। तो हम कंसाइज की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। टेक इट एज अ क्लास एंड इन द सेकंड क्लास ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 1 फॉर कंसाइज बुक। आपकी मैथ्स प्रेप वीडियोस प्रिपरेशन फॉर 24 बोर्ड एग्जाम्स। तो हमारा टारगेट 24 बोर्ड्स एग्जाम, 24 ICSE। अपना टारगेट बोर्ड्स को बना के चलिए। 6 मंथ्स बचे हैं, उसके लिए अपने कोर्स को कम से कम 3 मंथ्स पहले पूरा करने की कोशिश करिए एंड ट्राई टू फिनिश अप योर सिलेबस बाय द मंथ ऑफ दिसंबर बाय द मोस्ट। प्रैक्टिस करिए। उसके बाद इन द मीन टाइम कीप ऑन सॉल्विंग द प्री बोर्ड क्वेश्चन, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। I will put videos on all these one by one. I'm trying to first put down the videos for these chapters. So without wasting time, let us continue with the solutions of uh, these questions. If you have any suggestion for me which I can put extra in these videos, try to please let me know regarding that also, so that I may modify to help you more. As far as I am trying to do it, I'm trying to give you the solutions of all these questions, which you can practice them one by one and keep them from you for your reference also. So I've solved 20 questions in the previous video. Now I'm solving the question from 21st question onwards. So sine square, I'm opening the whole square, plus cosec square plus 2 sine a cosec a plus cos square plus sec square plus 2 cosec sec a. Now sine a into cosec a is 2 into 1, cosec into sec a is 2 into 1. So this would gives me the value 1 here and value 1 here. Sine square plus cos square का एक ब्रैकेट एक ग्रुप बनाइए और cosec स्क्वायर को अभी ऐसा ही छोड़ दीजिए, sec स्क्वायर को भी अभी ऐसा ही छोड़ दीजिए। 2 यहां से लिखिए, 2 यहां से लिखिए, 1 ये हो गया। यू गॉट 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस cosec स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए. Now this is 5 plus cosec is 1 plus cot square plus 1 plus tan square. 7 plus tan square a plus cot square a is the solution for your question. Good question it is, and important also. So mark these questions in your book as important, because this question is going to give you it can be asked in the board exam, because it is actually you know 3 steps of 4-step question. So please keep this thing in your mind. अपना आप इस स्ट्रेटेजी को बना के क्वेश्चन सॉल्व करिए। वो क्वेश्चन ज्यादा करिए जिनमें कि 3 या 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। आपका मैथ्स का एंटायर पेपर आईएससी बोर्ड का ऐसे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है जिसमें कि 3 या 4 स्टेप्स, मैक्स टू मैक्स 5 स्टेप्स पूछे जाते हैं। यू कैन नॉट एंड यू शुड नॉट आप करिए सारा काम एक बार, but you should not focus on the questions having 20 steps or 10 steps and complications. Nothing. A board paper is not like that. तो बी स्मार्ट स्टडीज करिए। ये तो आप स्मार्ट स्टडीज नहीं करेंगे, आपकी प्रैक्टिस तो आप टाइम तो खर्च कर रहे होंगे, लेकिन आपको उसमें उतना आउटपुट नहीं मिल रहा होगा। sec square a into cosec square a. What can I do with sec square a? I can write down sec square a as 1 plus 10 square a. And what is cosec square a? 1 plus cot square a. Multiply the bracket. 1 plus cot square a plus tan square a
Now we can't do with this anything, and we need them in our calculation also. So I am keeping them with me. Plus, now 1 is already there. The tan square A is 1 upon cot square A. ये 1 हो गया. I got 2 with this. This gives me 2 plus the answer is 2 plus tan square A plus cot square A. Easy question. I don't think there is difficulty in this. So don't make a impression of trigonometry in your mind कि बहुत difficult chapter है, बहुत difficult chapter है, नहीं होगा और कैसे इसका रिजल्ट आएगा. भाई बहुत आराम से आएगा. आपको उसको एक बार ढंग से करना पड़ेगा, लेकिन जब आप करेंगे ही नहीं तो फिर कैसे हो सकता है. आई एम reading this question again. LCM लीजिए. Two cosec square A is the answer. So you got 1 upon 1 plus cos A plus 1 upon 1 minus cos A. It gives at the end you are resorting to apply the identity, and that's what make it very easy and short. Again, you see, if I count it, you got 3 or 4 steps in this question, and the questions are very important for 3 marks scoring in your exam. Same question again. I simply take LCM. 1 plus sine A plus 1 minus sine A upon 1 minus sine square A. Sine A is cancelled. 2 upon cos square A. And what is 1 upon cos square A? Sec square A. You got 2 into sec square A as the answer. I hope you understand the question, everyone. And these questions are very easy. Keep practicing them. I will solve the remaining exercise in this video. I'll try to rather. So here I should take the LCM. Now I'm expecting कि सब बच्चों को LCM लेना आता होगा और LCM को सॉल्व करना भी आता होगा भाई. So cosec A into cosec A plus 1 cosec A into cosec A minus 1 cosec square A plus cosec A plus cosec square A minus cosec A upon cosec square A minus 1. So I can cancel this cosec and cosec A. You give me 2 into cosec square A upon cosec square A minus 1. What should I do with this? I'm still not finding way out. So I keep this cosec square A just like that. Focus on this. This is actually cot square A. 2 into 1 upon sine square. It's cot square is cos square upon sine square. That becomes sine square upon cos square. We got 2 upon cos square A. What would give you 2 sec square A. Question is done. So slightly difficult, not difficult in fact, थोड़ा सा step change है question के अंदर. आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन हर जगह पर है. आइडेंटिटीज को याद कर पाएंगे आप अगर तो. दिस चैप्टर डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम स्टेप.
sec into sec minus 1, sec into sec plus 1 upon, I'm doing it directly now, sec square a minus 1. Sec square a minus sec a plus sec square a plus sec a upon tan square a. Sec and sec is cancelled. 2 sec square a upon tan square a. 2 into 1 upon cos square. It is sine upon cos. It is cos square a what is 1 upon sine square है बच्चों? I hope ये सबको याद हो गया होगा. 2 cosec square is the answer for this question. I guess this question is clear to you. So I'm doing it now little fast speed. I hope you understand this. The next category question, आपको यहाँ पर questions को rationalize करना होता है. I don't call them rationalization. Do we call them rationalization? I also call it rationalizing, but it's not actually rationalizing. What we're doing is we're trying to settle the denominator, and for this I am multiplying it by 1 plus cos a upon 1 plus cos a. This gives you 1 plus cos a whole square upon 1 minus cos square a, that is a sine square a. Now you see the question is slightly twisted. I am trying to solve cos a, and there on that side they are talking about tan a and sec a. So actually there is a three-step relation, which is that cos a का रिलेशन sec a से होता है और sec का रिलेशन tan a से होता है. तो कहीं ना कहीं पर आपको cos को sec में लेके जाना है और sec को tan में लेके आना है. ये अपने दिमाग में एक फ्लो चार्ट तैयार करिए, एक अप्रोच को पहले डेवलप करिए. That will help you a lot to solve this question. So if I'm doing it correctly here is 1 plus cos a whole square upon 1 minus cos square a is sine square. I do not think I'm doing it in a correct manner. Then what should I do further? If my approach is wrong, or should I change this cos a here only into sec a? Let me try this. Keep this one in reserve. I'm trying a new step. 1 plus 1 upon sec a upon 1 minus 1 upon sec a. It is becoming sec a plus 1 upon sec a minus 1. Multiplying it by sec a plus 1 upon sec a plus 1. Now again think and try to point out my mistake in this question. If it will give me the desired solution or not, or I'm still doing it wrong. I'm trying to put you on test. It is correct or not? I don't think it is correct. Now, why it is not correct? Because I want sec a minus 1 whole square in denominator and not sec a plus 1 or sec square a minus 1 in denominator. So my term I am putting here is not correct. Let me revise this. So I correct this for you. So I just write down. So जो एक जनरल रूल बच्चे समझ जाते हैं भाई कि आपको हमेशा नीचे साइन को चेंज ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है. अब ये ऊपर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे हो गया सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये हो गया tan square a upon sec a minus 1 whole square. Tan square a upon sec a minus 1 whole square is a result of this equation. So you see what I've done. As told you, we're going to go from cos a to sec a and sec to tan a. That is what the beauty of this question is. A good question, marked important for your exam and in your book also.
with a slightly modified, slight twisted area in this question. Same kind of question here. I've got cot square A and cosec A plus 1 whole square. So what is the INT for cot square A? Cosec square A minus 1. Cosec A plus 1 whole square. So you can make it cosec A plus 1, cosec A minus 1, and cosec A plus 1 whole square. This is cancelled. I got cosec A minus 1 upon cosec A plus 1. Make it 1 upon sine A minus 1 upon sine A plus 1. 1 minus sine A upon 1 plus sine A is the answer. Denominator के sine A और sine A cancel out हो जाएंगे and you get the resulting answer as 1 minus sine A upon 1 plus sine A. And that's a very good question and it's thoroughly the applications of INTs in this question. Mark these questions important. They are slightly upper level questions, very well ideal questions for 3 mark in the board exams. 29th question. So what I do in this question is that I take directly the LCM. It is sine square and cos square 1 plus 1 2 plus 2 sine A it is 2 sec A is the result. So the steps are very simple and easy. You can see it now. It's open the square of 1 plus sine A, you got 1 plus sine square A plus 2 sine A plus cos square A. आपको जहां कहीं भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिखा करते हैं क्लब करके 1 के इक्वल कर दीजिए. यू गॉट 1 plus 1 2 plus 2 sin A. 2 कॉमन निकालिए 1 plus sin A 1 plus कैंसिल हो जाएगा. 2 upon cos A is 2 sec A. That is the answer of this question. I'm moving ahead with this question. 1 plus sine 1 minus sine A upon 1 plus sine A into I want sec A minus sine A. Try to make out कि हमको लेके क्या आना है. 1 upon cos A minus sine A upon cos. तो ये 1 minus sine A upon cos A है. I want to have a square of 1 minus sine A upon cos A. I should multiply it by 1 minus sine A upon 1 minus sine A. So 1 minus sine A का whole square upon 1 minus sine square A. Open up this inside the bracket. You got sec A minus tan A whole square. That is the question number 30 for you. A good question they are. कुछ तरीके अलग बन जा रहे हैं इन क्वेश्चन से करने के लिए. थोड़ा सा INT से दूर जा रहे हैं और रैशनलाइजिंग या फिर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चन हैं सारे ये वाले. इनको ये 2-3 बार कर करके देखिए तभी आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिकॉल हो पाते हैं.
Now, if you say, I show you this question solving from both sides. So, if I say cot A minus cos A, I take them. So, cot A is cos A minus sine A minus 1 upon sine A whole square. एक स्टेप नोट करिए, ये होल स्क्वायर्स हैं, तो मैं इसको ऐसे ही इसका ऑर्डर चेंज करके इसको ऊपर स्क्वायर लगा देता हूं. स्क्वायर को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड दिस बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, एंड यू गेट 1 minus cos A upon 1 plus cos A. I hope you understand the question very well. The question is easy. So you can see here, steps are simple. आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. आप ये बार क्वेश्चन देखकर आप ये डिसाइड करिए कि हमको क्वेश्चन को किस स्टेप में लेके जाना है, तभी आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं. द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन हियर अगेन. So I got cosec A minus 1 upon cosec A plus 1 upon sine A minus 1 upon sine A plus 1. There is no square. So now at this step, I want 1 plus sine A square in denominator here. मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था इनफैक्ट, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. स्क्वायर को कंबाइन कर लीजिए. cos A upon 1 plus sine A whole square. I hope the question is clear. Trigonometry कई कई monotonous हो जाती है बीच बीच में. So I always suggest that you should have a regular interval of practicing for trigonometry. आप वीक में एक बार वीकेंड्स में या कभी रात में खाली बैठकर ट्रिग्नोमेट्री के 10 से 12 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए. आपको ये आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं होती कि हमको सारे क्वेश्चन इकट्ठे सॉल्व करने पड़ रहे हैं. इट बिकम्स वेरी सिंपल दैट वे. 33rd question. New thing. The angles are not same. So I try to change them into their respective lower forms. I don't require cos in my answer. So what should I do? Eliminate cos from the question.
यू हैव योर आंसर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई आपको इसमें आईएनटी का इस्तेमाल नहीं करना है। एक सिंपल सा बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और उसको लेकर ही आपको क्वेश्चन को आगे लेकर चलना है। आई होप द क्वेश्चन इज गेटिंग क्लियर टू यू। ट्रिग्नोमेट्री का एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको करने का कि आपको उसकी प्रैक्टिस रिपीटेडली करनी पड़ती है। साइन थीटा को कॉमन निकालिए, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉमन निकाल लीजिए, 2 cos square theta -1. Now these two gives us tan theta and 1 - 2 sine square theta. Sine square theta is it is tan theta 1 - 2 plus 2 cos square theta. This will give you answer is tan theta. Wonderful question it is, and not very difficult as you can see. The easy basic question you have out of here. Sin A upon 1 plus cos A. Sin A into 1 minus cos A upon 1 plus cos A into 1 minus cos A. I'm simply multiplying and dividing by the conjugate of denominator. One minus cos square A upon sin square A. एक साइन से एक साइन काट दीजिए, got cos A minus cot A as the answer out of it. 1 upon sin A minus cos A upon sin A. 1 upon sin A is cosec A and cos A upon sin A is cot A. That gives you cot A minus cot A as the answer in this question. Questions are not difficult as you can see. I'm solving them all in 2 and 3 steps only. Like the other question also. बच्चे कहते हैं कि हमको बताएगा कौन कि ये स्टेप लगाना है, हमको बताएगा कोई नहीं भाई, बताएगा आपको आपका दिमाग जो आप प्रैक्टिस करके गए होंगे, जब आपका दिमाग लोडेड होगा ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया होगा, उसके टेस्ट दे दिए होंगे, आपको वही चीज पता लग पाएगी कि क्या हमको स्टेप लगाना है। सो ये गलत अप्रोच है कि हमको कौन बताएगा या पता कैसे लगेगा कि क्या स्टेप लेना है। जनरलाइज नहीं है टॉपिक, टॉपिक बहुत नए तरीके का है। आपको हर एक क्वेश्चन में एक नई अप्रोच को डेवलप करना है। We got sec A plus tan A as the result in this question. I hope you understand the solutions very well now. I am doing it little faster because I want to keep the videos short and try to cover up the entire first exercise in these two videos. First, first I have already posted. Second is this video, so this will cover up the basic structure of the questions in your mind. The second, third exercises are of the next level, which gives you how to learn, how to slightly more difficult questions are going to be there. Let us see this question now.
1 minus cos A does not give us anything as such in its present form. So what should I do with this? And this is 1 minus cos A is of not any purpose. I'm not able to rationalize or something or else. एंटीज केवल स्क्वायर में होती है, एंटीज कभी भी सिंगल टर्म में नहीं होती हैं. What the best come to my mind is that I can write down sine A as sine A into sine A upon cos A upon 1 minus cos A. ये और ये क्या बन जाएंगे? Sin square A upon cos A into 1 minus cos A. What is sin square A? 1 minus cos square A. You got 1 plus cos A upon cos A. So 1 plus sec is the answer. So these questions are and these questions हम बच्चे पहले जो अगर चैप्टर को पूरे एक बार प्रॉपर्ली सॉल्व कर चुका होगा तो उसको कोई स्टेप लगाने में डिफिकल्टी नहीं है, बिकॉज हम ट्रायल करना शुरू कर देते हैं अपने स्टेप्स का, हम स्टेप को लगाना शुरू कर देते हैं. हमको दिख रहा है कि भाई ये tan A है तो ये tan A ही हायर लेवल का है, यहाँ पर sin cos तो लोअर स्टेप पर लाई करते हैं, तो मैं इस tan A को ही कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, यही मुझको कुछ लोअर टर्म की वैल्यू दे सकता है. सो ये कॉन्सेप्ट याद करिए. अगर क्वेश्चन में 2-3 टर्म्स लिखे हुए हैं तो जो उसमें हायर टर्म्स हैं उनको ही लोअर में लेके आइए. दैट वुड ओनली हेल्प यू टू दिस क्वेश्चन. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट. चेंज देम ऑल इनटू with a square here. This 1 and this 1 cancel. What is left? 2 is the remaining answer. This and this will be cancelled out. Very good question. Different from the other questions. Try to do this question repeatedly and try to take the LCMs properly. Learn to take LCMs. Everything counts. और बहुत छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में आकर सरप्राइज करते हैं. आप उनको नहीं कर पा रहे होते हैं, जबकि हम उनको जानते हैं कि तो बहुत आसान सी बात है, हमको तो आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रही होती हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस कम कर रखी होती है. Practice is the one thing you should do in all respect. जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है. हम राइट साइड सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पर मैं देख रहा हूं कि आ क्या रहा है उधर.
चाहिए क्या हमको, तो हमको न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए चाहिए, तो मुझको यहां पर 1 प्लस साइन ए चाहिए। Because in the numerator, in the square root, it is 1 plus sin a whole square upon cos square a। रूट को हटाइए और सारे स्क्वायर्स को रिमूव कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आंसर आ जाएगा। तो मैंने वो क्यों करके देखा पहले वहां पर, ताकि मुझको ये पता लग पाए कि मुझको क्या टर्म कहां पर चाहिए। तो आई रिक्वायर्ड 1 प्लस साइन ए इन द न्यूमरेटर, यू कैन सी। So I'm multiplying, dividing by 1 plus sine a and 1 plus sine a. Numerator becomes 1 plus sine a whole square upon 1 minus sine square a. 1 plus sine a upon cos a is the required answer. I hope you understand everyone. Questions is now I will not say कि ये बहुत easy questions हैं। हम टेंड करते हैं कि हमेशा हम 1 प्लस साइन से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं भी होता है। फिर आपको ये रूट से रूट का मल्टीप्लिकेशन का समझ तरीका आना चाहिए। ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए है, इसलिए यहाँ पर होल स्क्वायर आया है। ये 1 माइनस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए है, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो अंदर कॉस स्क्वायर बन जाएगा और उसका रूट कॉस से बाहर आएगा, ऊपर होल स्क्वायर था तो 1 प्लस साइन ए ही बाहर आ जाएगा। मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 माइनस कॉस ए की 1 प्लस कॉस ए, आई कैन डू बोथ। तो बोलते हैं भाई हमेशा आपको जब मल्टीप्लाई करना है तो साइन चेंज करना है। आई विल नॉट से दैट, आई डू नॉट से इट्स लाइक दिस। सो cos a is 1 upon sin a minus cos a upon sin a. I require 1 minus cos a upon sin a out of the root. So I should have a square of 1 minus cos a in numerator and 1 minus cos square a in denominator. One minus cos a upon sin a is the answer. I hope you understand this. This is the answer of this question. So आपको लग रहा है कि हमको हमेशा 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई पर करना ही करना है, पर मैं तो ये डिसाइड करके देख रहा हूं पहले कि मुझको कैसे मल्टीप्लाई। सो जो ये टर्म है, जो ये मैंने चेक किया है यहाँ पर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको आप समझिए एंड ध्यान से देखिए कि मैंने क्यों किया है, और इससे क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है आपको सॉल्व करना, और गलती होने के चांस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। Is the answer. Hope you understand these questions. Now look at this question. यहां पर डिफरेंट साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में सेम साइन है,
1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, इसका रूट बनाइए, ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर ए और नीचे आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एक ही स्टेप का क्वेश्चन है केवल, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए हमको रूट से बाहर मिल गया। They can be nothing easier than this. They're very simple and easy questions. I hope you understand. So, I think I'm coming to end of this video because will solve few more. 1 minus cos square upon 1 plus sin A. I have this method coming to my mind. The answer is sin A. So these questions are, if you have a right approach in these questions, then you can see I just simply use the entity of cos square A as 1 minus sine square. Then I use this, that 1 minus sine square A is actually 1 square minus sine square. It is A square minus B square, 1 plus sine A, 1 minus sine A as the answer. That's how you should do these kinds of questions. These questions are perfectly easy and doable and they're good for board exams. प्रैक्टिस करिए, आपको इनके आंसर्स अच्छे से अचानक मिल जाएंगे. I want 2 cos square A. So I am eliminating sine square from the denominator. 2 sine A upon 1 minus 2 cos square A is the answer. Say what? Questions are easy. करेक्ट. स्क्वायर खोलना है, 1 ये हो जाता है और 1 ये हो जाता है. 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इज द आंसर. ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथ्स का जो जब तक आप मैथ्स करते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री हर जगह आती रहेगी. ट्रिग्नोमेट्री से हर चीज इवॉल्व आउट होती है. ना ही ये अलजेब्रा है, ना ही ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पर ये अलजेब्रा में भी है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी है, ये सीक्वेंस सीरीज में भी है, ये कैलकुलस में तो है ही, ये इंटीग्रेशन आएगा 11 में उसमें भी है, 12th में है, फिजिक्स में है. एवरीवेयर देयर इज अ रोल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री.
कॉटे प्लस कॉसेक माइनस 1 अपॉन कॉटे माइनस कॉसेक प्लस 1. A wonderful question and a very good question it is. So इस क्वेश्चन को मार्क करिए अपने पास इंपॉर्टेंट एंड रिमेंबर द स्टेप्स वेरी केयरफुली. हम इस 1 को उस आईएनडी से चेंज करते हैं. जो कॉसेकेंड कॉट को इन्वॉल्व करती है. You see, these two are cancelled. Such a wonderful question. 1 को चेंज करिए cosec square minus cot square में. When you change this 1 into cosec square minus cot square, and this is a square minus b square. And then take out this bracket common here, and this will simply gives you cot a plus cos के outside. इस ब्रैकेट का 1 ये आ गया और एक माइनस साइन के संग ये कॉसेके माइनस कॉटे था, जो यहां पर आके माइनस कॉसेके प्लस कॉटे बन गया. पूरा का पूरा डिनोमिनेटर कट गया. You got cot A plus cosec A as the answer of your question. Cot A cos A upon sin A होता है and cosec A 1 upon sin A होता है. 1 plus cos A upon sin A इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है. I am expecting that you are able to understand all these questions properly by now. I have solved almost 50 questions in these two videos. I am expecting that these videos are going to help you. I want 2 into 1 plus cot A in my question. I am not seeing it yet. मुझे अभी भी क्वेश्चन में अपना आंसर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट इवन देन ट्राई करते हैं. सो आपको भी ऐसा लगता है कभी कभी अपने क्वेश्चंस के अंदर कि हम वो मुझको वो नहीं मिल रहे हैं क्वेश्चंस, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग विद मी. व्हाट शुड आई डू फर्दर? सो ये साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है, और ये अपॉन 1 प्लस कॉस ए है. क्या हम इसका आगे और मल्टीप्लाई करें अभी, या हमको क्या करना चाहिए? ऐसा मैं ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए. मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा इस क्वेश्चन को पिकअप करूंगा.
I am trying to give you this question as for your own practice. क्या ये steps यहाँ पर सही नहीं हो रहे हैं या मुझे कोई और स्टेप यूज करना चाहिए? आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर आइडिया? क्या मैं इनको अलग अलग रैशनलाइज करूं दोनों फ्रैक्शंस को? व्हाट शुड आई डू विद दिस क्वेश्चंस? आपको क्या समझ में आता है इन क्वेश्चन के आगे? दिस इज टू बी कंटिन्यूड, दिस इज नॉट कंप्लीट in the next video. So try to see and solve this question on your own. There are 2-3 more questions left in this exercise. The next video will be continuing from here only. Again, I would say more and more practice makes you perfect. जितना ज़्यादा practice करेंगे इन questions की उतना ज़्यादा perfection आएगा. Long videos हैं, they are almost quarter hour or 1 hour videos, because आपको संग में बैठकर लगातार questions करते रहने चाहिए. आप अपने फोन में क्वेश्चंस को चला लीजिए, वीडियोस को रख लीजिए सामने अपने और क्वेश्चन कॉपी करिए एंड स्टेप बाय स्टेप मुझको फॉलो करते जाइए. दिस विल गिव्स यू अ वेरी थॉरो प्रैक्टिस फॉर these questions. I take off in this video from this video now. Again, I will repeat as I always say, and then for questions, subscribe the channel, please. More you subscribe me, more encouraged we will be to give you new things. We are trying to give those students who are interested in NDA preparation and they are in class 10th or in class 11th. So I will put a video for the syllabus of class 10 very soon that will open an insight about the NDA syllabus, what the NDA exam और क्या होता है एनडीए एग्जाम. एक मेरा वीडियो अभी आएगा इस चैनल पर जो आपको एनडीए के बारे में सब कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन देगा जो हम बच्चों को नहीं होती है. हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि हम कैसे पढ़ाई शुरू करें एनडीए के लिए एंड ऑल. मेनी बॉयज मेनी गर्ल्स हियर ड्रीम ऑफ एनडीए. आई विल ट्राई टू पुट वीडियो फॉर दैट. टिल देन, बाय बाय. थैंक यू.